Hello everyone. Today we are going to see the continuous time Fourier transform, that is CTFT, continuous time Fourier transform. How do we define continuous time Fourier transform? And then what is the necessary conditions to exist this Fourier transform? Why we are going for the Fourier transform? That we are going to see. So the first of all, the definition of continuous time Fourier transform of signal x of t is, it is represented by x of j ohm or x of j omega. We can read it as x of j ohm or we can read it as x of j omega. Okay. For the continuous time signal, CT signal, okay, the angular frequency will be represented by ohm. This is a angular frequency. Unit will be radian per second. And for the DT system, this angular frequency we are represented by omega. Okay, so this is we call a digital angular frequency. Unit will be radian only. Okay. So for CT signals, we are angular frequency will be represented by ohm, and for DT signal angular frequency will be represented by omega for DT system. Okay, so the x of j ohm is equal to minus infinity plus infinity x of t into e raised to minus j omega t dt. Okay, this is a definition of Fourier transform. Fourier transform any signal x of t is integral of x of t e raised to minus j omega t dt. Okay, then the inverse Fourier transform of x of j ohm is the inverse Fourier transform लेंगे हम लोग तो x of j ohm का से हमें x of t मिलेगा, and this x of t is equal to 1/2 pi minus infinity plus infinity x of j ohm into e raised to j ohm t d ohm. Okay, here is also ohm. Okay, so you remember this is okay. Sometimes it's quite confusing. Okay, for the CT system we'll use angular frequency as ohm, and for DT system we'll use angular frequency by omega. Okay, so here this shows that this x of t having Fourier transform x of j ohm, or simply we say that x of ohm. Okay, like this. So this is a Fourier transform pair. Okay, this is we call time domain. Okay, by taking Fourier transform we are entering into the frequency domain. Okay, like this. So this is a frequency domain. Usually non-periodic signals can be transformed into the frequency domain by using Fourier transform. Okay, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है वो कैसा बना हुआ है, वो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से बना हुआ है. ठीक है, अगर आपको पता रहेगा तो इफ यू नो एनी सिग्नल इज मेड अप ऑफ द instantaneous addition of number of sinusoidal signals of different frequency and amplitude. Okay, तो एनी सिग्नल whether it is a square wave signal, triangular signal, square wave signals ऐसा बना हुआ है, तो नंबर ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इनका एडिशंस करके आप लोगों को मिला हुआ है स्क्वायर वेव सिग्नल बना हुआ है. सेम इज द केस फॉर द ट्रायंगुलर सिग्नल्स. ओके, बट दीज आर द पीरियोडिक सिग्नल्स. इवन दो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द साइनोसाइडल सिग्नल्स. सो नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट से वो बना हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हमें ये फोरियर ट्रांसफॉर्म से मिलता है. So usually non-periodic signals can be transformed into frequency domain by using Fourier transform. Okay, in Fourier domain, okay, Fourier domain we call as a imaginary frequency domain, and this Fourier domain it is seen that amplitude and phase of the signal varies with respect to frequency. Okay, so if you take the Fourier transform any signal, then it will transfer into the Fourier domain, and in Fourier domain it is seen that the amplitude and frequency, amplitude and phase of the signals in frequency Fourier domain will be varies with respect to frequency omega. So therefore the variation of amplitude of the signals with respect to
frequency is called as amplitude spectrum. Okay, so how does this variation of amplitude of the signal with respect to frequency is called as amplitude spectrum, and the amplitude spectrum is non-periodic. Amplitude spectrum of non-periodic signals are continuous in nature. It is not discrete in nature, but it is continuous in nature. Okay, so amplitude spectrum, amplitude, yeah, we say that magnitude response. Another way for the amplitude spectrum is magnitude response. So this amplitude spectrum and magnitude response अगर आपको चाहिए है, this will use us the additional informations about the signal. Okay, टाइम डोमेन में जो सिग्नल्स रहता है उसका काफ़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशंस रहता है. यही पता चलता है हमें कि हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल्स विल बी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, बट अगर हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए है, ओके, कि हाउ डज द सिग्नल्स इज मेड ऑफ व्हाट it is how many frequency component contained in these signals, and how these by different frequency component changes the amplitude of the signals. ये सारा इंफॉर्मेशन अगर हमें पता करना है तो विल एंटर इनटू द Fourier domain. Okay, and therefore the variation, what is amplitude spectrum? The variation and amplitude of the signal in Fourier domain with respect to frequency ohm is called as amplitude spectrum. Okay, and it is continuous in nature. Then similarly, phase of the signal is also varies in Fourier domain with respect to frequency omega, and it is we call as a phase spectrum or phase response. Spectrum stands for variation of phase with respect to frequency. Spectrum term is related with the frequency, band of frequency. Okay, so the variation of phase with respect to frequency is called as phase spectrum. Okay, then amplitude spectrum is even symmetric. If you see the if you take the Fourier transform of any signal and if you plot its amplitude spectrum, then it is seen that this amplitude spectrum is even symmetric. So this amplitude spectrum contains adjacent quadrant. Okay, this is y-axis, suppose x-axis, so ये और ये quadrant में रहेगा. Okay, and that is even symmetric. We say that phase spectrum is odd symmetric. Phase spectrum is odd symmetric, and therefore it is contained opposite quadrant. Okay, तो यहाँ पे है तो इधर रहेगा, यहाँ पे है तो इधर रहेगा, like this is a. तो phase spectrum is odd symmetric, however amplitude spectrum is even symmetric. Then CTFT, if you see here now, CTFT are used to obtain the frequency response of the signal. Okay, CTFT is basically how does this signal is made up of, and how does the frequency, what is frequency response? Frequency response, we said it's a for different frequency how the signal uses the response. Okay, so CTFT are used to obtain the frequency response of the signals, which is a combination of magnitude response and phase response. Okay, so if you let us, so frequency response, what it is? Frequency response is a combination of magnitude response and phase response. Okay, and what does this frequency response gives us? कि this एक पर्टिकुलर सिग्नल है, सपोज ये सिग्नल कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से बना हुआ है, और ये हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर हमको उसका एम्पलीट्यूड फेज चेंज करते हैं तो सिग्नल पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये सारा हम लोग स्टडी करते हैं इन दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. Okay, now let us say that what is the necessary condition for the existence of Fourier transform. Okay, necessary conditions for existence of Fourier transform we call as a Dirichlet condition. This is also we call as a Dirichlet condition, name of the scientist. Okay, so Fourier transform कौन से सिग्नल का लिया जा सकता है? तो ये तीन कंडीशन जो सिग्नल्स का सेटिस्फाई होता है उसका Fourier transform हम लोग ले सकते हैं. Okay, पहला कंडीशंस क्या है? एक्स ऑफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. ऑफ कोर्स Fourier ट्रांसफॉर्म ले रहा है मतलब लोग सिग्नल का इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, तो सिग्नल का इंटीग्रेशन पॉसिबल होना चाहिए. जो सिग्नल का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है वो सिग्नल्स का हम लोग Fourier ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं. ऐसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि एक्स ऑफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन, मतलब इफ यू इंटीग्रेट दी एक्स ऑफ टी के विद द लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए. Isn't it? That is the meaning of this
एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब. सेकेंड, एक्स ऑफ टी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ x of t has finite number of maxima and minima within any finite interval. Okay, the meaning of this property is what it is. Let us say that suppose this is a signal है, ऐसा signal है, this is a signal. It consists of how many maxima? So this is one maxima, this is another maxima. Okay, ये ऐसा signal से और आगे तो ये एक maxima हो गया. Okay, these are the minima, we say that these are the minimums. Okay, so that is the meaning of this x of t. so एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया आप लोगों ने, फाइनाइट इंटरवल, ये टाइम पीरियड लिया हम लोगों ने. तो ये टाइम पीरियड में हाउ मेनी मैक्सिमा मिनिमा, तो वो फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा होना चाहिए, इन्फानाइट नहीं होना चाहिए. सो ऐसा बहुत सारा ऐसा 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 नहीं होना चाहिए, इन्फानाइट नहीं जाना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. x of t has a finite number of maxima and minima within any finite interval. तो ये फाइनाइट इंटरवल है, इसमें सिग्नल मैक्सिमा, ये वन मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, ओके, एंड मिनिमा, दिस इज वन मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा. ओके, सो लाइक दिस ऐसा होना चाहिए, मतलब फाइनाइट होना चाहिए मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो एक्स ऑफ टी मस्ट हैव द फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल. थर्ड वन, एक्स ऑफ टी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज विद इन एनी फाइनाइट टाइम इंटरवल. ओके, सो दिस इज वी कॉल्ड द डिसकंटिन्यू. यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो गया, यहाँ तक गया, ओके, सडनली इधर चेंज हो गया. तो हियर विल गेट द इंक्रीज हो रहा था, यहाँ तक इंक्रीज हो गया, इधर डिक्रीज होगा. हियर विल गेट वन डिसकंटिन्यूटी, हियर विल गेट सेकंड डिसकंटिन्यूटी, हियर विल गेट थर्ड डिसकंटिन्यूटी, फोर्थ डिसकंटिन्यूटी, फिफ्थ, सिक्स, लाइक दिस. सो द डिसकंटिन्यूटीज जो है सिग्नल्स का, वो भी विद इन अ फाइनाइट टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, फाइनाइट डिसकंटिन्यूज होना चाहिए, इन्फानाइट नहीं जाना चाहिए. इज इट? So x of t has finite number of discontinuity within any finite time interval. Okay, तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो भी सिग्नल सेटिस्फाई करता है, ओके, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है. ओके, एंड दीज आर वी कॉल्ड द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, आल्सो वी कॉल्ड द डिरिचलेट कंडीशन. ओके, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द रिलेशन बिटवीन लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, so if you take the Fourier transform signal x of t, it will be x of ohm, which is equal to integral of x of t e raised to minus j ohm dt. The Laplace transform signal x of t is represented by x of s, and which is equal to integral of x of t into e raised to minus st dt. Okay, now from this equation 1 and 2 अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो Fourier transform is a special case of Laplace transform. Okay, Fourier transform is a special case of Laplace transform in which s is equal to j ohm. ये s की जगह पे हम लोग j ohm करते हैं, तो for this and this will be same. Okay, and we are getting the Laplace transform becomes equal to Fourier transform. That is x of s में अगर s का वैल्यू j ohm पुट करते हैं हम लोग, तो we are getting the Fourier transform x of t, isn't it? Provided that this is provided that okay, only this x of t must be absolutely integrable. Okay, x of t अगर absolutely integrable रहेगा, तो ऐसा सिग्नल जो है उसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना रहेगा, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आप लोग ऐसा भी अनदर अप्रोच यूज कर सकते हैं कि पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, बिकॉज वी आर फैमिलियर विद द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर s है वहाँ पे s इज इक्वल टू j ओम पुट कर दो, विल गेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल. ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रोवाइडेड, एक ही कंडीशन है. ऐसा करते वक्त लैप्लास ट्रांसफॉर्म से जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, तो ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक्स ऑफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. अभी एक्स ऑफ टी इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मतलब क्या, कौन सा सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो सकता है, तो जो टाइम बाउंडेड सिग्नल है. लेट अस से दैट दिस इज अ स्क्वायर पल्स है, ऐसा रेक्टेंगुलर पल्स. इसका ड्यूरेशन अगर आप लोग देते, दिस इज अ टाइम बाउंडेड सिग्नल, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, तो इसको टाइम बाउंडेड सिग्नल्स बोलते हैं. ओके, सेकंड सिग्नल्स लेट अस से दैट विल बी द यूनिट स्टेप सिग्नल्स लाइक दिस. Okay, this is a unit step signals. This unit step signal is not time bounded signals because it is extended from 0 to infinity. This is continue up to the infinity. तो ये time bounded signal है क्या, time limited signal है क्या, तो नहीं. इसका duration खींचना है signals का, it will be extended up to the infinity. So this is not absolutely integrable. ऐसे signal is not absolutely integrable. Okay, however this signal is absolutely
integrable. So time bounded signals, okay, or limited time duration signals are we called as absolutely integrable signals. However, time unbounded signals are usually we called as absolutely non-integrable. Okay, तो इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म से नहीं निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग u ऑफ t इज इक्वल टू 1 है, उसका u ऑफ s निकाल लिया 1/s, एंड इधर अगर आप लोगों ने अभी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो u ऑफ s इज इक्वल टू j होम पुट कर दिया तो 1/j होम. दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट. ओके, वही हम लोगों ने आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो from these two equations shows that the Laplace Fourier transform is a special case of Laplace transform in which s is equal to j omega. Now if you put s is equal to sigma plus j ohm in equation 2 s is equal to sigma plus j ohm, so we are getting this, it will be like this: x of sigma plus j ohm is equal to x of t e raised to sigma of t sigma plus j ohm t dt. Then it will be simplified like this: e raised to ohm t into e raised to minus j ohm t, ऐसे सेपरेट किया. एंड इफ यू सी हियर x of sigma plus j ohm is equal to Fourier transform of x of t into e raised to minus sigma t, which indicates that, okay, so x of sigma plus j ohm is equal to a Fourier transform x of t e raised to minus sigma t, which indicates that the bilateral Laplace transform x of t can be interpreted as Fourier transform x of t into e raised to minus sigma t. मतलब Laplace transform क्या है? तो Laplace transform x of s क्या है? तो x of s is the Fourier transform of x of t e raised to minus sigma t. Okay, it will be like this. So x of s is the Fourier transform of x of t e raised to minus sigma t, like this. Okay. If sigma is 0, then Laplace transform and Fourier transform are same. Okay, so if x of t is absolutely integrable, then Fourier transform x of t can be obtained by from Laplace transform by replacing s is equal to j ohm or j omega. Okay, j ohm, replacing j ohm. But this is not true of signal which is not absolutely integral. जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको अभी डिस्कस किया मैंने. ओके, कि x ऑफ t अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल रहेगा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय पुटिंग s इज इक्वल टू j ओम. ओके, बट अगर x ऑफ t एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो वैसा नहीं कर सकते. ओके, ये फॉर एग्जांपल विद एग्जांपल इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. कंसीडर नाउ द एक्सपोनेंशियल सिग्नल e रेज टू माइनस एटी u ऑफ t. सो इसको मैंने स्केच किया तो ऐसा एक्सपोनेंशियल कर रहेगा e रेज टू माइनस एटी को. आगे के यहाँ पे 0 हो रहा है तो दिस इज अ टाइम बाउंडेड सिग्नल है, टाइम अनबाउंडेड सिग्नल. So this is a time bounded signal. Area covered by this signal is finite. Okay, it is a time bounded signals. इसने इतना एरिया कवर किया हुआ है और फाइनाइट है, तो टाइम बाउंडेड सिग्नल्स है. सो टाइम बाउंडेड सिग्नल है तो उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं 1/s प्लस ए एंड s इज इक्वल टू j ओम पुट करते हैं तो x ऑफ ओम मिलेगा आपको, x ऑफ ओमेगा, x ऑफ ओम मिलेगा. एंड दिस x ऑफ ओम इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज जनरली ओम एंड ओमेगा में कंटिन्यूसली कंफ्यूजन होते रहता है. सो x ऑफ ओम इज इक्वल टू 1/j ओम प्लस a. सो s इज इक्वल टू j ओम पुट किया. ओके, सो इफ यू पुट s इज इक्वल टू j ओम वी आर गेटिंग द x ऑफ ओम एंड दिस x ऑफ ओम इज इक्वल टू 1/j ओम प्लस a. सो हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टाइम बाउंडेड सिग्नल. नाउ सेकंड थिंग इज यूनिट स्टेप सिग्नल्स. नाउ दिस इज नॉट अ टाइम बाउंडेड सिग्नल, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया आप लोगों को. तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते तो 1/s. लेकिन इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं आप लोग तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू दिस वन. ओके, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये ऐसा रहेगा. इफ यू टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म इट विल बी लाइक दिस. सो अगर हम लोग डायरेक्टली u ऑफ s है उसमें 1/s है, इसमें अगर हम लोग j होम पुट करते s इज इक्वल टू तो ऐसा आता था. बट दिस इज नॉट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल इज व्हाट इट इज पाई डेल ओम प्लस 1/j होम. इट विल बी लाइक दिस. ये टर्म आप लोगों को नहीं मिलता है फिर ऐसा है, isn't it? Okay, so this is basically the difference between Laplace transform and Fourier transform. And when we are using Fourier transform, what is the use of Fourier transform?
Okay, that we have seen Fourier transform used to obtain the amplitude spectrum and phase spectra, which gives us the informations about the how the signal's amplitude and phase will be varies with respect to frequency. Okay, thank you.